एंड देखते हैं कि सिप्री रिपोर्ट ने क्या फाइंड आउट किया है. ओके, सो बेसिकली सिप्री स्टैंड्स फॉर Stockholm International Peace and Research Institute. Now, there are findings about who is the supplier, who is the, you can say, major exporter in the world. So it points out that India remains the world's largest importer of arms. सबसे बड़े हम, फर्स्ट नंबर पे it will be India as a major importer. Second is Saudi Arabia. And third biggest importer, you will be surprised, third biggest importer is Qatar. Now that country is a size equivalent to दिल्ली जितना साइज है उसका. अब आप सोचो, वो तीसरा बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है. This is one fact that is there. Okay, it is also saying that arms import, or basically we are importing arms from different countries. Okay, now Russia was the largest supplier of arms to India, but its share of total imports have fell from 64 to 45%. France is the second largest supplier. France is the second largest supplier here. Okay, और अब आप एक चीज समझो इसको, ग्लोबली वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स कौन है? बिगेस्ट एक्सपोर्टर यूनाइटेड स्टेट्स. सेकंड इज रशिया एंड द थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर इज फ्रांस. विच डेस्टिनेशन is the biggest importer from France? India. India is the biggest importer of weapons from France. हम है सबसे बड़े, सबसे ज्यादा हम ले रहे हैं फ्रांस से हथियार. फोर्थ इज चाइना, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर की बात चल रही है यहां पे. क्लियर? चाइना इज द फोर्थ बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स. Now you tell me one thing here, in your understanding, to which country China is going to export its weapons? आपको क्या लगता है कौन से कंट्री को चाइना सबसे ज्यादा वेपन्स देता होगा? What's your point of view? To which country China is going to export weapons? You already know the answer. आपको पता भी होगा उसका आंसर. Okay. Which country? I'm expecting some answers. So 54% of Chinese export is going to Pakistan and 12% is going to Bangladesh. So our neighbors are buying. हमारे पड़ोसी ले रहे हैं चाइना से हथियार, चाइना का बिजनेस अच्छा करवा रहे हैं. This is how things have been. Okay. ये है एक्सपोर्ट की कहानी. नाउ वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर, ठीक है, मैंने आपको लिस्ट बताई. इंडिया वाज द फर्स्ट, सऊदी अरेबिया वाज सेकंड, थर्ड वाज कतार, फोर्थ वाज ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ वाज चाइना. वर्ल्ड्स फोर्थ बिगेस्ट एक्सपोर्टर एंड फिफ्थ बिगेस्ट इंपोर्टर. वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर एंड फर्स्ट, मतलब फिफ्थ बिगेस्ट इंपोर्टर. फिफ्थ बिगेस्ट इंपोर्टर. नाउ यू टेल मी वन थिंग हियर, फ्रॉम वेयर चाइनीज आर getting the equipment, from where they are importing their maximum equipment, which country could be the biggest supplier to China? According to you, which country would be the biggest supplier to China? कौन होगा सबसे बड़ा सप्लायर चाइना को? टेल मी. कोई रफ गैस लेगा यहां पे? कोई गैस लेना चाहता है इस चीज के ऊपर कि चाइना को कौन यहां पे सबसे ज्यादा वेपन सप्लाई करता है? एंड दैट कंट्री इज यूक्रेन.
So Chinese are buying weapons from Ukraine. Ukraine is the major supplier to Chinese. What Chinese could be importing? No one knows. But you go into depth, Chinese, they might be importing or they might have bought some tanks from Ukraine. कुछ टैंक लिए होंगे यूक्रेन से. ओके अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, यूक्रेन ने टैंक, मैं शायद बोल रहा हूं, यूक्रेन ने टैंक यहां पे एक्सपोर्ट किए, चाइना को भी एक्सपोर्ट किए, पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट किए. एंड पाकिस्तान इज, यू कैन से, मेकिंग एम्यूनिशन फॉर दोज पर्टिकुलर टैंक्स. वो यूक्रेनियन टैंक है और पाकिस्तान उनके लिए एम्यूनिशन बना रहा है. एंड नाउ इट इज एक्सपोर्टिंग बैक टू यूक्रेन. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. पाकिस्तानी एम्यूनिशन अब वापस यूक्रेन को बेचा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई चल रही है. सो दीज आर द डेवलपमेंट्स दैट वी हैव नाउ. ये पूरी कहानी हो गई, ठीक है जी, इतना चल गया है यहां पे. So we have diversified. Okay, Russia accounted for 45% of India's import, followed by France and then US. So this has been a major, you can say, factual things here. So India was the third largest supplier to Myanmar after Russia and China, and 14% Myanmar के imports जो हैं वो हम address कर रहे हैं. So this have been the development related to, you can say, CPRI report. Okay, so we still remained, you can say, the major importer. Now there are some other interesting facts associated with this. Now world over we have seen, see, if we divide India into different components, well, not India, internationally we divide it. So you have North America, South America, Africa, okay, Asia, Europe, Oceania group. Okay, this is how things have been. Now in Africa, arms trade has gone down. Their arms trade has gone down. There it has gone down. Relatively here as well, it has gone down significantly. But overall in totality, if we see, it has gone down by somewhere around 5.5%. इंडिया का कितना कम हुआ देखो, 11% हम लोग कम ट्रेड कर रहे हैं हम. So overall it is saying 5.5% ही कम हुआ. It means that someone is buying equipment. Which continent is buying equipment right now? Mass scale पे खरीदा जा रहा है equipment. That is Europe. And it is the European countries who are buying the weapons right now, or the reason is Russia-Ukraine war. So earlier, these European countries, they were in passivity. They were not buying equipment. They were not spending on arms and equipments. But right now, things have changed over the night. And because of this Russia-Ukraine war, they are buying more equipment. They are spending on it. And this is the new trend. And these European countries, they used to claim that ये लड़ाई झगड़ा और ये war जो है, ये तो in developing nations का काम है. That हम डेवलप्ड हो गए हैं, हमने रियलाइज किया है, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं. बट अगेन यूरोप इज द सेंटर ऑफ ट्रबल फॉर दिस वर्ल्ड. ऑलवेज रिमेंबर इन द पास्ट, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ग्लोबल प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ वॉर, दैट ग्लोबल प्रॉब्लम वाज रूटेड इन यूरोप. और आज की डेट में भी लड़ाई कहां पे हो रही है? यूरोप में हो रही है. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी है हमें, दैट इट इज, और इट कुड स्प्रेड आउट अगेन. It could further spread out. You cannot rule out the possibility. Okay. So this has been the development here. ये पूरा खेल है जो यहाँ पे CPRI रिपोर्ट के अंदर mentioned है.